Assalamu alaikum and welcome to another episode of Her Story with Zainab Faisal. आज हमारी जो गेस्ट हैं वो बेहद ही यूनिक हैं. आज तक हम जितने गेस्ट से बात करते रहे हैं they have reached the pinnacle of their career. But what about the first step of your career? और उस सिलसिले में without further delay let me introduce you to Iram Ali who's a resume writing expert. Assalamu alaikum Iram. Walaikum salam Zainab. Welcome to the show. Thank you so much and it's a pleasure to be here. Thank you so much. मैं इतनी excited थी जब I came across your profile and I actually saw कि आप BBC उर्दू में भी आपका इंटरव्यू हुआ था. Yes. और पहली दफ़ा मैंने एक ऐसी खातून जो पाकिस्तान में हो एंड जिनकी जो फील्ड है वो रेज्यूमे राइटिंग है. Yes. और एज अ बिजनेस वुमन और एज अ पर्सन हुज रिटन CVs एंड अप्लाइड फॉर जॉब्स दोनों तरफा ये इतना पेन और प्रॉब्लमेटिक पार्ट है. और मुझे लगा कि वो पहली दफ़ा हम ऐसे बंदे से मिल रहे हैं जो ये मसला हमारा पेन पॉइंट हल कर रहा हो. सो इरम मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए प्लीज़. Thank you so much for inviting me. And professionally, I am a coach and I am an expert resume writer. और मैं different services offer करती हूँ to professionals, ranging from resumes, cover letters, LinkedIn optimization, portfolios and websites. इरम रेज्यूमे राइटिंग तो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल करियर है और आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं अब इसमें. पर आपने जब अपनी करियर जर्नी शुरू की थी तो वो कैसे शुरू की? डिड यू स्टार्ट विद बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? कैसे था आपका करियर पाथ? थोड़ा सा अगर हमें आप इसके बारे में बताएं. Absolutely. When I started, to be honest, I started with a lot of self-doubt. I wasn't really sure if this is something that I should be doing, if I can do, or in the longer term, will it serve me, will it help others or not? Because like you said, this is a very non-conventional and एक बहुत ही हटके सी चीज़ है. And when I started, nobody was writing resumes for other people. Because nobody was doing it, Zainab, I had to master the art of resume writing. To me, when somebody reached out to me, they weren't just reaching out to me for a mere transaction for my business. वो ना अपनी jobs की hopes लेके आ रहे थे मेरे पास. So in order for me to be extremely well at my own skill, I had to, in the beginning, fight a lot of self-doubt. Self-doubt को combat करने के लिए I started making use of online resources. I watched a lot of videos. I practiced a lot. I did lots of certifications, lots of courses. And with time, alhamdulillah, client की wins और positive feedback देख के I personally felt that this can be the way for me. And at some point in my career in the beginning, I realized that through this profession, I wasn't just growing professionally, but I was growing personally as well. मैं interact करती हूँ different clients के साथ. I get to understand different situations, different backgrounds that people come from. There are a couple of challenges that I faced in the beginning. Initially, I was prioritizing quantity over quality. मैंने freelance start किया था तो मेरे लिए at the very earlier stage of my business ज़्यादा matter करता था कि और clients आए मेरे पास और ज़्यादा income होगी. But soon I realized that wasn't the deal for my business and I had to prefer quality over quantity. And I had to give individual attention to each client's order for a resume. जिसकी वजह से I laid down a very strong project management system even though मैं घर से काम कर रही थी. But I had to be very mindful about my timeline, people who were placing the order with me, their timelines. And I think initially when I started, तब concept नहीं था resume writers का इतना and this industry wasn't at that boom जितना आज है. So बहुत मुश्किल होता था अपनी cost को justify करना clients के सामने. I used to charge per CV 2500 in PKR. तो मुझे हर एक को justify करना पड़ता था शुरू में as to why that 2500 rupees wasn't really an expense for somebody. It was rather an investment into the future.
लोग बहुत हंसी खुशी सेम अमाउंट शॉपिंग पे भी खर्च कर लेते हैं, मूवीज़ पे खर्च कर लेते हैं, एक डिनर पे खर्च कर लेते हैं. बट व्हेन इट केम टू इन्वेस्टिंग इनटू देयर ओन प्रोफेशनल लाइव्स, investing into something as basic as a CV, a resume, a LinkedIn, a cover letter. So people were very hesitant to pay initially. So I would say I faced these challenges in the beginning, but with time I understood, and Alhamdulillah, I reached that point where um, people could trust me with their jobs, and I think that matters the most. सो जैसे आपने ये प्लंज लिया फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जॉब, है ना, कि आप रेज्यूमे राइटिंग में आई, तो अगर आप मुझे अपनी करियर का पहली जॉब के बारे में बताएं कि आपने कैसे, हाउ यू स्टेप्ड इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ 9 to 5. Sure. So right after I graduated from my university and I completed my bachelor's, I immediately signed up for my master's. I knew कि job तो करनी है because independent होना है life में, वरना कुछ नहीं होगा. I knew at the very beginning that I have to be self-sufficient for myself. So I started applying to different jobs, and I would say that Alhamdulillah, I've been fortunate in my career. The first job that I landed was of a content writer at a international organization. And Alhamdulillah, as time passed on, my performance was well appreciated by the management, and soon enough, I was actually the only girl in my organization to receive promotions thrice. I worked in the corporate sector for consecutive 5 years, and I've had the opportunity to work for local and international brands. And when I left the corporate world, I was making a 6-figure salary. And it was when I had traveled for over 50 times already. And I don't think at my age a lot of people get a chance to live that corporate side of life. Alhamdulillah, I was really fortunate that way. But somewhere I always felt I was helping somebody else's dream. Sounds really cliche, लेकिन मैं किसी और के लिए काम कर रही थी. Also, kahin na kahin, I felt I wasn't really producing impact-driven work, and that is something that really mattered to me. I was about to get married, and I had almost used all my savings. 30 days exactly before 1st of July 2022, I resigned from my last job. I did not have any backup, and I think मेरे बैंक अकाउंट में कुछ 25,000 रह गए थे. मैंने अल्लाह मियाँ का नाम दिया. I consulted with my now husband, and he was like, I'll support you in your journey, and I'll support whatever you decide. मैंने resign कर दिया. After the honeymoon phase of life was over, I realized कि मतलब अब मैं फारिग तो नहीं बैठ सकती, और एक month to month salary की आदत भी लग गई थी. I had to do something. It got to me. How about I put some trust and faith into my own skill set and go back to what I used to do as a freelancer back in my university life. Oh. I used to write resumes for people when I was in my university. So I saw somebody, this woman, I would like to name her Nameer Aurangzeb. She is the first ever client of my business. She posted on this female-oriented group कि उनको कोई urgently CV writer चाहिए. I reached out to her, told her I'm a newbie and you would be the first ever client if you book me. And I feel I have this set of skill and I would like to help you, and I would do this free of cost. She got back to me. She was kind enough to trust my skill set. She got her resume made, and soon enough, she actually landed a job. That is when I realized that this has a lot of potential, and not just that, this niche is a lot needed in the Pakistani job market. I just recalled my own days when I was graduating my college. I hoped somebody would be there to teach me कि अच्छा यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो आपकी resume किस तरीके की हो सकती है. For let's say somebody who's a fresher who doesn't have a professional experience. Nobody was there. When I graduated and completed my bachelor's, nobody was there. Master's, nobody was there. So throughout, I saw this gap in the job market. And
I personally felt that through my skill, through my knowledge, and through my niche, I can actually bridge this gap. And for professionals, not just young professionals, but across different industries, different age groups, because nobody else was doing this in Pakistan. And that is how I think my journey began. हाँ, सो मैं ये भी पूछना चाहती थी, इंटरेस्टिंग, कि पहली सीवी कैसे बनाई आपने अपने लिए, वो कैसी थी? अब अगर इफ़ यू लुक बैक नाउ, तो वो I think मैं कैसे आप रेट करेंगी उसे? I would rate it probably 6 out of 10. It was terrible. And I think बस मैंने जहाँ पे अप्लाई करना था कंटेंट राइटर के लिए, बस मैंने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स भर दिए थे. एंड इवन दो मैंने ब्लाइंड शॉट नहीं मारना था, मुझे थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देख के बनाई थी मैंने सीवी. बट नाउ इफ आई लुक बैक, आई एम लाइक टेरेबल वर्क, Kiram, you could have done a lot better. But I have always been advocate for continuous learning. Once I landed that job, उसके बाद जैसे ही मेरी promotion हुई, I went back to my CV and I updated it. This is one thing that I see a lot of individuals. This is one mistake that I see a lot of individuals making. They literally forget their resumes and they put it on a dump. वो उठाते हैं अपनी सीवी को और वो एक कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं और वो अज्यूम करते हैं कि वो सीवी तो खुद ही खुद अपडेट होती रहेगी. You need to give that piece of paper time, because your life, not just your livelihood, but your entire life sometimes depends on that piece of paper. So I'm one of those people who kept updating my CV, and now I'm kind of confident कि अच्छा ठीक है अब इंशाल्लाह. सो जब आपने अपना शुरू किया इरम काम, तो आपने पहला जो आपका क्लाइंट आपने लिया, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेंशन की कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपनी सर्विस दी. पहली विन हुई तो आपने उसके ऊपर एक केस बिल्ड किया. अक्सर हमारे यंग बच्चे होते हैं, जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो वो पहले ही क्लाइंट पे वो कहते हैं कि सारी कॉस्ट उसे मांग लो, उसे ले लो. सो ये एज एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, एंड यू हैव अ टीम अंडर यू, ये एक बहुत बड़ा लेसन है जिसमें बारे में मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप और बताएं कि व्हेन यू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू गेट योर फुट थ्रू द डोर. Sure. So in my case again, alhamdulillah, I have been fortunate this way as well. My first ever client, Nameer, she sent me a WhatsApp message. It was a thank you note from her end, and she offered to pay me herself. And she was somebody who said that you've given your time, you've given your effort, and I would like to pay you. Please send across your account details. जो मेरी जर्नी है या मेरा केस है, ज़रूरी नहीं है will be the same for everybody. In order for anyone who's just started their business, one thing that you have to be very mindful about is you need to stop chasing clients. You need to start chasing your work first. Clients will come. Clients आ जाते हैं आपके पास. आपको अपने काम को chase करना है. And you need to put it out online. ऑनलाइन ब्रांडिंग को, पर्सनल ब्रांडिंग को इस तरीके से समझें. अगर कोई शॉप ओनर है, जब तक वो शटर ऊपर नहीं करेगा तब तक उसके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे. अगर शटर नीचे है, पीपल विल एक्सपेक्ट कि दुकान बंद है. थिंक ऑफ योर पर्सनल ब्रांडिंग द सेम वे. आपने फेसबुक पे पेज बना दिया, लिंक्डइन पे बना दिया, यूट्यूब पे बना दिया. Until and unless you're not posting content on those channels, you're not inviting anybody on your platforms. Why would anybody hire you or think of you as a thought leader in your niche until and unless you're not posting content? When I say content, I don't mean कि आप बस content के चक्कर में कहीं से कुछ copy paste कर लें, कुछ भी डाल दें, आप हफ्ते में एक दिन शो अप करें, बाकी 6 दिन आप सोते रहें. No. You want results, you need to be consistent. You want results, you need to work hard. You want results, you need to have faith in yourself first. Clients खुद नहीं आएंगे. Clients को आपको जाके ढूंढना भी नहीं चाहिए. आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए. Especially, I think, take advantage of the fact that we're living in a digital age. We have the liberty. आप अपना Facebook पे पेज बनाएं, and then you have literally the liberty to follow nobody else's guidelines. आप अपने हिसाब से उसकी विजुअल अपील
रखते हैं, जो भी रखते हैं आप रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी विजुअल अपील रखना चाहते हैं आप रख सकते हो। आपको जो कंटेंट पोस्ट करना है आप कर सकते हो। आपको कंटेंट का फॉर्मेट क्या रखना है, पिक्टोरियल रखना है, टेक्सचुअल रखना है, वीडियो रखना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हो। कीप डूइंग दैट. You will ultimately make a fan base of yourself and ultimately your work. Also, no business grows overnight. कुछ लोगों की ज़िंदगियों में शायद ऐसे फॉर्मूलाज काम कर जाते हैं, बट आई वुड से वो थोड़े से लक बेस्ड भी होते हैं. Businesses don't happen overnight. You need to give in extra hours. When I started my first business of making resumes for people, now I'm offering different services. I used to give 17 or 18 hours in a day. To a point my husband would be tired of me constantly talking to people on phone, constantly being on my laptop. But अगर मैं शायद वो 17 या 18 घंटे उस वक्त ना देती तो मैं आज यहाँ पे ना बैठी हुई होती. I would not have had my team to back me up. Absolutely. So you need to keep knocking on the door. The more you put yourself out there, the more opportunities are more likely to fall for you. That's would be my number one advice. वेरी इंटरेस्टिंग. इरम, रेज्यूमे राइटिंग ना एक बड़ी पर्सनलाइज्ड चीज़ है, राइट? जैसे कि आपके पास हर तरह की पर्सनालिटी का क्लाइंट होता होगा जो आपको रीच आउट करता होगा और कहता होगा कि मेरी पर्सनालिटी और मेरी इंडस्ट्री, और इतनी इंडस्ट्रीज़ भी अब डिफरेंट हो गई हैं, द टाइप ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ वर्क हैज़ चेंज्ड एज वेल. तो उसमें जब आप कस्टमाइज़ करती हैं, हाउ डू यू वर्क विद देम? मतलब क्या चीज़ें हैं, पॉइंटर्स हैं जो आप जहन में आप रखती हैं, सवाल ऐसे पूछती हैं कि लगे कि हाँ ये कोई जैसे कि हम अगर आप अब तो चैट जीपीटी से अपनी सीवी लिखवा लें, राइट? तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से these AI based platforms? Okay, I'm different because I bring a personalized approach towards my work. How do I do that? Anytime anybody walks in and they tell me that, Iram, you do the job for us, first thing first, I give them a call. I understand where they're coming from. It is important to understand anybody's prospect, organization, or let's say the future titles that they are targeting. Until and unless I don't have that clarity in my mind, I won't be able to help you with the CV. मुझे क्लैरिटी देने से पहले मैं कैंडिडेट्स को फोर्स करती हूँ कि आप अपने पास पहले क्लैरिटी लेके आएँ. आपको मुझे आके 3 टारगेटेड रोल्स बताने हैं फ्यूचर के, और जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं आपकी CV नहीं लिखूँगी. मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं who really have no idea कि उनको करना क्या है, बिल्कुल, या उनके पैशंस कहाँ पे लाई करते हैं. या बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं who are just like कि बस जॉब मिल जाए, बस कहीं पे भी कुछ हो जाए. I tell them, no, that's not how you will land a job. You need to first decide कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर तो है पहले, तो किस इंडस्ट्री में, नंबर 1. नंबर 2, आपको अगर इंटरेस्ट है, let's say in the next 5 years or 10 years of your journey, where do you see yourself continue working? Is it going to be in the same industry that you're in? If they'll tell me yes, I'll write content around that. If they tell me no, I will tell them, अच्छा ठीक है, tell me the second best interest of yours. Tell me the third best interest of yours. I will restrict and stop them at the third one, because I'll teach my clients. This is something that, one thing that also separates me is that I always involve my clients. If you come to me and you tell me कि हम ATS friendly CV बनानी है, मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अपने क्लाइंट से पूछती हूँ ATS क्या होता है and how does that work. If the clients tell me, well and good. 99% of the time clients don't know. ATS होता क्या है? Okay, I'll tell you. So ATS stands for Application Tracking System. It's a software that most of the companies now use. Initially हम क्या करते थे, हम CVs forward करते थे at a given address, physical address. वो change हुआ, evolve हुआ into an online address, email address. अब companies ने क्या किया है, पहले HR individuals को manually filter करनी पड़ती थी CVs.
अगर उनके पास 1000 CVs आई हैं तो और उनको सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हायर करने हैं, तो इट वॉज अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क ऑन द HR's एंड, राइट? This software basically scans and filters out resumes for people. That basically means अगर किसी कंपनी में कंटेंट क्रिएटर की पोजीशन ओपन हुई है तो HR कुछ कीवर्ड्स है वो सॉफ्टवेयर में डाल देगा कि यू नीड टू फिगर आउट लेट्स से 10 से 12 ये कीवर्ड्स ऑन द CVs दैट यू गेट. That software does the job for the recruiter. उसको अगर 1000 CVs मिली हैं तो उनमें लेट्स से 500 ऐसी CVs होंगी जिसमें रिक्वायर्ड कीवर्ड्स थे, मेंशन थे. सिर्फ वो CVs आगे फॉरवर्ड होंगी और रिक्रूटर के पास जाएंगी. सो व्हेन क्लाइंट्स come to me and let's say they don't know what ATS is और keyword optimization का मतलब क्या है, मैं fancy words use करके अपना काम कर लूँ ख़त्म just because you know मेरे पास आ गई पेमेंट मेरे क्लाइंट की. I don't work that way. I teach them. ChatGPT आपको आंसर दे देगा, आपको आपकी CV बना देगा, बट ये वाली चीज़ें ChatGPT won't do it for you. To give you one-on-one time, you can't expect ChatGPT to do that. So मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ करियर काउंसलिंग भी कर रही होती, बिकॉज इट्स ऑल पहले के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें, क्लैरिटी लाएं, अपना करियर पाथ एक हद तक डिफाइन करें. Absolutely. एंड देन यू राइट अ CV. Absolutely, absolutely. That is also needed. That is needed because without it, if you put through a CV that has a generic information, जिसकी करियर समरी में मेंशन ना हो कि आप किस किस्म के जॉब टाइटल्स को टारगेट कर रहे हैं, you are most likely to not make it through. Based on my experiences, CVs that have content that specifically state the jobs that they are targeting, they have better and higher chances of getting interview calls back. Until and unless I don't help someone or I don't give that sense of clarity to somebody, they won't be able to do it for themselves when they are sitting for an interview on the other side of the table. So I need to make sure कि अगर उनसे कोई सवाल करता है कि आपकी CV पे करियर गैप था, आपकी CV में 2 साल का गैप है, क्यों था? I guide them. I help them with the responses. I tell them, ठीक है, आपने मुझसे resume का order place किया है, let's fix your resume first and then let's fix this area of yours. Okay. Then I give them guidance on the interview skills. A lot of clients don't know how to email an HR. कि हम अच्छा ठीक है आपने CV बना दी, but then they come back to me and they say कि हम email में लिखे क्या? मतलब PFA के आगे भी कुछ लिखना होता है या फॉलो अप कैसे करें? एक रिक्रूटर का जवाब तो आ गया था, लेकिन हम उनको दोबारा ईमेल क्या करें? मतलब people end up sending question marks to HR. Yes, absolutely. So there are lots of ways that I end up helping with my clients, and I feel like these services or these strategies nobody else will give you. I'm speaking of the online platforms. So इरा मुझे ये बताओ कि आपके पास लोग क्या ये समझते हैं कि उनसे CV वो नहीं बना सकेंगे और वो इसलिए आपको अप्रोच करते हैं? हाउ वो ये खुद आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? Most of the times I've noticed कि 2 पैटर्न्स हैं. एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. हम उन लोगों में से हैं जो बहुत सुस्त हैं, हम काहिल हैं और हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है. We would happily pay you or anybody else to do the job for us. एक ये सेगमेंट है मेरे क्लाइंट्स का. दूसरा सेगमेंट उन लोगों का है which is also the bigger segment of my clients, I'd say, of people who don't know how to update their resumes. So when clients come to me, अगर ऐसे resumes होते हैं जिसमें minor changes हों, बहुत ही minor changes करके भी clients खुद update कर सकते हैं, मैं gracefully regret कर देती हूँ. मैं उनको बता देती हूँ कि आप ये 5 pointers आप कर लो edit खुद ही, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, you can fix it yourself. In those cases where I see that the resume needs major improvement, both content-wise, structure-wise, format-wise, I then accept the order. But ये वो लोग होते हैं जिनको actual में नहीं पता. आज की age में भी they prefer not searching up things enough for themselves.
because probably I think now the attitudes and the mindset have shifted towards resume much recently. अब तो फिर भी थोड़ा सा रुझान जा रहा है यहाँ पे, लेकिन पहले तो इतना भी नहीं जा रहा था. हमारी डिस्कशन हुई थी कि रेज्यूमे और सीवी में कुछ फ़र्क होता है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या फ़र्क होता है इसमें. ओके, सो कुछ बेसिक डिफरेंसेस बताती हूँ मैं. आपकी जो रेज्यूमे होती है, इट हैज़ टू बी कंसाइज, ठीक है, प्रेफरेबली 1 पेजर हो. आपकी जो सीवी होती है, इट इज़ डिटेल्ड इन नेचर एंड it can be longer than a 1 page, ठीक है. CV mostly उन professionals की होती है who have a very long professional experience, ठीक है. Not just that, I think CV is more suited for those who have a long working history, and also for academic and literature and research fields. Most basic difference between a CV and a resume is कि resume has to be concise. आपकी जो CV होती है, it can be long and it is long in fact. Some of the basic differences between a CV and a resume is कि a resume is a 1 pager, a CV is longer than that, ठीक है. आपकी जो resume होती है, it has to be precise. Your CV is long and it is detail oriented, ठीक है. Not just that, but CV is mostly preferred for those cases where individuals have really extensive professional experience, or if it's related to, let's say, the fields of academic, research or education. Whereas resume is more suited and it is actually more preferred in today's time, and it is all about keeping very precise and to the point information, and it being very relevant to the job that you're applying for. जैसे मैंने आपको अपना भी केस बताया, मैं तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं कि वो एक पैटर्न देख लेते हैं कि ओ ये अच्छा सेटअप वो बनाया हुआ, क्या कहते हैं ना, कि वो फॉर्मेट है, कलर है, अरे भाई ये अच्छी लग रही है, हमने इसमें डाल दी, सो अब आप तो बिल्कुल, मुझे तो एक बड़ा साइंटिफिक मेथड सा ये लग रहा है कि प्रॉपर आपने अपने पहले गोल सेट करें, अपने जहन में क्लैरिटी लाएं, आप क्या देखते हैं, मे बी आपको किसी प्रोफेशन या प्रोफेशनल को एस्पायर करते हैं तो उसकी आप प्रोफाइल्स को देखते हैं. तो अगर जैसे एक फ्रेश ग्रेजुएट हो और समबडी जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं करियर या जॉब्स, तो क्या 5 डूज हैं एंड 5 डोंट्स हैं? 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर डूज एंड डोंट्स of let's say writing your resume or CV. Okay, so consider these as mandatory do's and don'ts. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड लेवल ऑफ स्किल सेट जो भी हो, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट डूज फर्स्ट. Number 1, try your best to have your CV on 1 page or maximum 2 pages. जहाँ रिक्रूटर के हाथ में 2 से ज़्यादा पेजेस की CV हाथ में आती है, कंसिडर कि आपकी CV वहीं पे रिजेक्ट हो गई. While doing that, number 2, make sure that you keep a very clean, concise and consistent structure throughout your resume. जिसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप फॉर्मेट कर रहे हो, सब कुछ कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने हेडिंग को कोई डिफरेंट फॉन्ट दिया है, नीचे वाले फॉन्ट्स सब हेडिंग में आपने कुछ और फॉन्ट्स किए हैं, कभी आपने पिक्चर डाल दिया है, कभी आपने लोगोज डाल दिए हैं. डोंट डू दैट. कीप अ वेरी नीट फॉर्मेट थ्रू आउट. दैट्स योर नंबर 2 do of any resume. Number 3, make sure that you use action verbs. Action verbs and right action verbs. अगर आप किसी भी जॉब को डिफाइन कर रहे हो, action verbs are part of professional experience. That is the biggest part of any resume, right? While explaining any job, make sure that the bullet points that you put, they start with an action verb. आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर कोई पुरानी जॉब है तो उसको पास्ट टेंस में मेंशन करेंगे, अगर कोई करंट जॉब है तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में मेंशन करेंगे.
if there are any grammar mistakes, any typos, within 2 seconds your CV will be rejected. And this is what Harvard studies say. So you need to be extremely vigilant about such mistakes on your CV. Fifth and the most important do would be, out of so many do's, I would say, quantify. Quantify your experience, quantify your achievements. जब मैं बोलती हूँ quantify, इसका मतलब है putting a number to your experience. अगर आपने टीम को लीड किया है या अगर आपने प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं, यू नीड टू मेंशन कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए ऑन द CV फॉर बेटर इम्पैक्ट. आपने कितने लोगों की टीम को लीड किया फॉर बेटर impression out there. Instead of just saying that I lead a team of creatives and social media managers, better is to say leading a team of 10 creatives and 2 social media managers. It sounds more impact driven, right? So you need to quantify your experience. Quantify करें, career summary में अपने years of experience को quantify करें. If you have any achievements, if you've achieved any sales targets, if you've managed any follower count after a particular social media campaign, put that down. So these would be my top 5 and go-to do's of any resumes. Don'ts would be definitely don't have any typos. Like no. There is no margin for grammatical mistakes. You can't be applying for a senior leadership role while making silly mistakes. That just makes you look quite unprofessional and unserious towards the job. Number 2, don't exaggerate. Don't lie. Don't put down things on a CV that you tomorrow cannot justify yourself. Like, you don't need to be overconfident. You just need to be confident and authentic. That is about it. Don't add everything in the contact details. Don't add references. पिछले ज़माने में references add नहीं not करें. anymore. Not anymore. This is very important. अच्छा. It's actually it takes a lot of space on the page. You could rather utilize that space and put something more valuable तो towards कैसे yourself. पता चलेगा कि let's say ये person है, इसके अगर कोई references नहीं है, so how do we do a background check? It's social media that's ruling the game. Oh, all right. There's so many organizations that tell you to remove references. And instead you can use that space and put something more valuable. You can put down your passion project there. You can put down your achievements there if you have any. You can put down relevant courses and certifications there. Why waste that space for something that's not going to add value to your profile? Don't put irrelevant information. What is your religion? What is your location? What is your date of birth? Nobody needs that information. Don't put irrelevant information, I would say, as my last point here. If you're applying for the position of, let's say, a legal intern, make sure that the entire CV content reflects that you have somewhat experience and interest in legal industry only. You cannot portray yourself as a creative individual and hope to land a position as a legal intern. You can't do that. You need to make sure that from top to bottom, because the human eye is designed like that, right? We never read anything from bottom to top. We always read from top to bottom. Make sure, and consider this as a pro tip, the first half of any page in a CV has to have the most important information. जितने numbers आप डाल सकते हो first half में डालो आप. Core skills में डालें, career summary में डालें, contact section में जाके अपनी LinkedIn को hyperlink करें, portfolio को बनाएं, उसको hyperlink करें, and then make sure it lies in the first half of the page so that the first moment the recruiter looks at your resume, they know in their heads that this candidate can be potentially called. So इरम एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फॉर दोज पीपल जिनको हाइपर लिंक का नहीं पता कि सीवी में हाइपर लिंक या क्लिकेबल लिंक आप पता की बात कर रही हैं? Absolutely. Okay. So these clickable links could be anything. Advisably, it should be LinkedIn.
पोर्टफोलियोज एंड आपके वेबसाइट्स। ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपने जिस कंपनी में काम किया है उस कंपनी को लिख के उसको भी हाइपरलिंक कर लें, या हर एक अपनी टिकटॉक की हैंडल को डाल के उसको भी कर लें, until and unless you're not belonging from a creative field. What hyperlink does for you is, because you have a liberty to play within 1 or 2 pages only, right? एंड CV में आप सब कुछ नहीं डाल सकते। CV में मोस्टली आप अपने हार्ड स्किल्स डाल सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स इतने नहीं डाल सकते, राइट? क्रिएटिव स्किल्स आप इतने नहीं डाल सकते, बिकॉज यू नीड टू बी इन अलाइन विद द ATS गाइडलाइंस. So wiser is that you make them hyperlinked or clickable in nature. I as a recruiter should be able to click on your LinkedIn and directly land on your profile. Okay. I'm more likely to go through it then instead of searching up your name and then investing time कि अच्छा मैं पहले जाऊँ, मैं LinkedIn को खोलूँ, फिर मैं LinkedIn पे ढूंढूँ कैंडिडेट को. So you might want to invite the recruiter onto your social platforms, onto your portfolio and website and save them time as well. वेरी इंटरेस्टिंग. अब इरम मुझे ये बताएं कि आपके पास जब क्लाइंट आते हैं यूजुअली व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप या करियर में वो किस स्टेज पे यूजुअली होते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है टू help them in their CV or resume? Do you get clients from all age groups? Like consistently सबसे ज़्यादा क्या predominantly आते हैं आपके पास? I think I get clients of all age groups. Okay, so one is not dominant over the other. No, absolutely not. I'm catering to young and really fresh graduates having no professional experience. I'm catering to mid-level professionals, and I'm also catering to those clients who've been working in the industry for the past 20 years or beyond. Oh, So wow. this is also one aspect of the business that I really like, because I do get to communicate with people from all age groups, and this gives me an insight as to the level of progression that everybody wants to be at, and the level of effort that these different age groups put is a lot different, I'd say. Absolutely. इरम, आपसे बात करती है और ये जो आपने इतनी सारी बातें बताई जो ये मच नीडेड है, क्योंकि अक्सर देयर आर लॉट ऑफ फैंटास्टिक माइंड्स आउट देयर और वो अपने आप को सही कम अक्रॉस नहीं कर पा रहे होते हैं. इसमें आपने एक पर्सनल ब्रांडिंग की भी बात की. अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग का पहले सोचूं तो मुझे एकदम ख्याल आ जाता है कि कपड़े कैसे पहनने हैं कहीं इंटरव्यू में जाने के लिए, अच्छा वेबसाइट शायद मैं बना लूँ अपनी. एक पर्सनल ब्रांडिंग को अगर आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें. Absolutely. So think of it as an online reputation for yourself. We are always so concerned about our own reputations offline, right? हम like you said, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा मेकअप किया हुआ है, कैसे हेयर है, all of that. We need to be, especially where the world is moving now, we need to be a lot more mindful towards our online personal branding as well. When I say personal branding, I don't mean that you color or paint all the social media channels with one color only. And this is the most common perception of people. कि branding का मतलब है कि आपने colors and typography को lock कर लिया है अपने लिए और अपने brand के लिए. For example, personal branding goes beyond that. It's not just optimizing or updating your social media channels. It's about putting yourself out there. It's about the fact कि आप किन events पे, किन topics पे, किन चीज़ों पे बात करते हैं, किन चीज़ों पे आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, आप कहाँ से फ्री नॉलेज खुद गेन करते हैं, कहाँ से आप लोगों को स्नीक पीक देते हैं इनटू योर पर्सनल लाइव्स, योर ओपिनियंस, योर वैल्यूज़, योर वर्क एथिक्स, योर सेंस ऑफ वर्क, योर स्टाइल, योर विजुअल अपील, everything ties up to personal branding. And it is beyond logo. It is beyond typography and color palettes. It is not just that. It's about how you're positioning yourself in a crowded market. There are millions and millions of profiles across all platforms. But how come I am a living example that the BBC respondent reached out to me on LinkedIn via an inbox?
my personal branding isn't that strong. If you open my social channels, I'm not following the same font always. I'm not following the same color palette always. There's one thing that I'm doing always. I'm always talking about my work. I am always talking about my services. I'm always talking about my skill. There's some days when I'm teaching them for free to people. I'm not charging. I'm giving them tips. There's some days I'm actually reviewing the resumes for absolutely free. It's all the efforts together that actually brought BBC to my DM. And actually, my life changed after that. So, this is the power of personal branding. Whatever you do, whatever skill, whatever field that you're in, you need to put yourself out there. ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा के पीछे या बस वायरल होने के लिए कुछ भी करें एंड you make use of tactics, cheap tactics to rise to fame overnight. Don't do that. I wouldn't recommend. Be very authentic, be very original. Whatever you say, whatever you do, I would highly recommend that you do it online and you do it with so much authority that you end up creating your little fan base. And that fan base will ultimately turn into paying clients. Absolutely. आपके पास लोग एक क्या कहते हैं ड्रीम के साथ आते हैं, है ना, जैसे आपने शुरू में भी बताया था. एंड इन शॉर्ट अगर मैं आपकी बात समझूं तो आप कहती हैं कि आई विल हेल्प यू लैंड योर ड्रीम जॉब, इफ़ नॉट प्रॉमिस यू बट हेल्प यू लैंड इट. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आया और सीवी बन गई कोलैबोरेशन में करके, जी उन्होंने 10 जगहों पे 50 जगहों पे अप्लाई किया बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. सो आई मीन हाउ डू दोज क्लाइंट्स अप्रोच यू? आपको खुद क्या पर्सनल फेलियर फील होता है? व्हाट हैपन्स? Okay. So every time somebody reaches out to me, and this is also something that I wanted to talk about. While I was working in the corporate world, I was arrogant. I had that attitude that I am a brand person. I get to lead a team of people. I get to lead a team of 10 boys. Nobody else is doing that. I get to tell the agency what to do or what not to do. I had that mindset and I had that attitude. Since I've started making resumes for people, I've personally felt that I'm a lot humble. Because especially in Pakistan, the kind of economic situation we all are in, the kind of instability that we all face, there's so many people who reach out to me with so many duas, with so many hopes, with so many prayers that, they look at me as somebody who might be able to change their lives or who might be able to help their children be something, land somewhere. In case where clients don't end up landing a job, they come back to me either frustrated, angry, or really upset. In all three cases, I tell them one thing. Number one, I tell them to relax and I tell them that I'll definitely re-review the resume together. If there is any room of improvement, let's make that, let's fix it. But give yourself another 3 to 6 months of consistent applying to jobs. If I've made you a new resume and you expect to land a new job within next 48 hours, that won't happen. Job hunting isn't a linear process. It is not a step-by-step process. You update your documents here and you land a job here. It doesn't work that way, right? So I tell them that it is okay to be frustrated. It is okay to be upset. But if you want something to happen, you need to redirect your focus. It shouldn't be on just the rejections. It should be towards understanding the why behind those rejections. Are you applying sufficiently? Which platforms are you applying? Which platforms are you using to apply? How are you reaching out to HR? How are you networking? What is the message that you write when you reach out to any HR? I ask them series of questions. If I see any gap, I identify it to that individual. I teach them, I guide them accordingly. I redo their resumes, and that's when the clients go and then they retry again. And I tell them this very fairly because I feel like sometimes clients need to hear this really transparently. Just because you've given
your money to somebody else, to expect results to happen without your 100% efforts, that is wrong and that is unfair. And I don't take that then. I have to be very transparent in my communication. And if I feel that there are gaps with the individual's process of job hunting, I assist them with that as well. ओके, दैट्स एक्सेलेंट। इरम, अब हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं, राइट? माशाल्लाह यू आर मैरिड, Yes. है ना? और जब आपने ये बताया कि आपने व्हेन यू गॉट मैरिड यू सॉर्ट ऑफ उसके बाद यू डिड अ करियर स्विच, है ना? सो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि बिकमिंग, पहले यू स्टार्टेड एज अ क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कंटेंट राइटर, और फिर उसके बाद आपने ये प्रॉपर अपनी अंडर टीम डेवलप की और आपने आगे यू नो यू टुक दिस फॉरवर्ड और फिर और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किया काफ़ी एक्सटेंसिवली। बट यू नो बीइंग मैरिड एंड देन ऑल्सो हैविंग अ करियर, ये बहुत सारी ख़वातीन के लिए स्पेशली इट्स समथिंग दैट दे थिंक इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, ये नहीं हम कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपने कैसे मैनेज किया और कैसे मैनेज कर रही हैं? I think this question is really close to my heart. Looking back, was I confident moving forward? I wasn't. Was I scared? I was scared. Did I know where I was headed? No. But was the ride worth it? Definitely worth it. When I made that switch, and after I found myself free the entire day and the entire honeymoon phase of my marriage was over, I decided that I am going to do this and I choose to work from home. And I discussed this with my husband. And I was quite hesitant. And I feel like I would have given up long time back if it wasn't for my husband. I think today, alhamdulillah, whatever is happening in my life, I credit my husband 99% for it. If he wasn't there, I would not have made it, and this is my personal journey. He made it to a point. I live in a joint system with my in-laws, right? He drew the line for me. He was the first person to draw the line, and then I followed his footsteps. He told his family that just like himself, I'm working too. And when I'm working, my door shouldn't be knocked, or I shouldn't be expected to step out and meet the guests, or I shouldn't be expected to involve in the chores just because I'm working from home. He drew the first boundary for me. And gradually, I realized that it was actually really important. And in a way that helped me and that actually laid down the foundation for my business. Like anybody else, like a 9 to 5 corporate girl who isn't disturbed or who isn't expected to be present at all times or at any time at all, be it their family or be it within in-laws, I operate the same way. When I'm working, I'm unavailable for friends and family and for the rest of the world. I'm just available to my clients. This shift felt impossible. But again, I think with supportive partner, with supportive family, and with continuous faith within yourself, good things are bound to happen. So मुझे बताओ कि you know you said draw the boundary and you're glad that he initiated it. So इससे पहले ये ख्याल आता था कि यार एक बाउंड्री मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर मैं अपनी बिजनेस करूँगी या मैं अपना काम करूँगी फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम? I was too scared to even say that out loud. पर ख्याल आता था? Definitely, because I was always under the impression कि अब मेरी शादी हो गई है. I am living in a joint system and अब तो यही ज़िंदगी होगी. मतलब either I can go back to 9 to 5 corporate job so that I can be out of home and continue earning for myself. Yeah, the other thing is that I can give up. It was actually my husband who drew this line. And I still believe कि आज मेरी ज़िंदगी में कुछ भी जो कुछ भी हुआ है, all is because of that man. Because he made sure that whatever work I do, I should have that environment for myself. अगर घर पे for example अगर मैं
अपने कमरे से काम कर रही हूँ, और अगर नॉक होता है, गेस्ट आए हैं, बड़ी common चीज़ें ये होता है। लंच चढ़ाना है, मासी को देखना है, या फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर से बच्चे आ गए हैं, उनको देखना है, नो, दैट कांट हैपन विद माई वाइफ. शी इज़ वर्किंग. Like how I am unavailable, my wife will also be unavailable. एंड दैट्स फैंटास्टिक एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको अपने इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत चीयर लीडर्स एंड सपोर्टर्स चाहिए होते हैं. और इस पे मैं इरम, एक और मुझे ख्याल आ रहा था कि जैसे हम मेंटोर्स की हमेशा बात करते हैं, और हर स्टोरी में हम हमेशा वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर्स. आपकी ज़िंदगी में कोई मेंटोर रहा है? Unfortunately, no. And I would also say, Why is that? fortunately, when I started, especially with my niche of resume writing, there was nobody who was doing this. Especially within Pakistan, I found nobody. Back when I graduated in 2017, मुझे अपने लिए कोई नहीं मिला था. And even though I was a very proactive student, I was one of those students who was involved in anything and everything that came my way. I was that type of student. I looked hard. I didn't find anybody, unfortunately. आज अगर मैं देखूँ, has the trend changed? And are there industry thought leaders? Yes, there are many. But fortunately also, I would say, the very fact that I had nobody, I have this passion inside of me to be that. And it feels quite rewarding, to be honest, when I'm invited as a mentor to places. I feel like I'm giving the same hopes to people and same guidance to people that one day I had a right to get as well. Nobody taught me. Nobody taught me the basics of communication skills. Nobody taught me interview skills. Nobody taught me the basic email writing skills. Nobody taught me how to write my own cover letter even. So the very fact that I get to do it for others, and that eventually helps them land a job, that's life altering. That's the most absolutely. impact driven work I could have ever picked up in my life, and I would do it all over again. यू नो हाउ इंटरेस्टिंग. ओवरऑल जब भी आपसे मैं अभी बात थ्रू आउट कर रही हूँ, आप बार बार इम्पैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं. मुझे लगता है कि मोर देन पैसे बनाना, काम है कि पर्पस हो, काम में पर्पस हो. कई दफ़ा आपने ये भी कहा कि मैंने फ्री भी किया, मैं डेज रखती हूँ, मैं फ्री रेज्यूमेज रिव्यू करती हूँ. मैं ये चाहती हूँ इरम कि आप ये बताएं कि ये आपका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ कि मैंने सिर्फ नंबर वन, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई योर पर्पस, नंबर वन. नंबर टू, ये कैसे ख्याल है कि कोई मसला नहीं है, हम फ्री भी कर सकते हैं. नंबर थ्री, ये वाली सोच के अगर इतने चेंजेस ही नहीं चाहिए थे तो मैंने क्लाइंट को चार्ज नहीं किया, बल्कि पोलाइटली डिक्लाइन किया और बताया क्यों, और आप ये चेंजेस कर लें तो आपका काम हो जाएगा. Sure. So मुझे personally लगता है कि I am responsible for everything that happens with my business, right? Because I'm the sole face of it. And I have a very small team, but whatever I do in my life, I'm a sole believer of the fact that it will come back to me. The goodness that I Karma give is a big away, thing. it is indeed a big thing. I know for a fact there are so many individuals today who can't or might not be able to afford my price per resume. And in that segment of audience, I don't want them to think कि अच्छा ठीक है, अब ये भी बात नहीं करेंगी, अब ये भी हमारी CV नहीं देखेंगी, अब हम किसी और को ढूंढ लेते हैं. I don't want them to go back from my DM and be disappointed. If the least I can do is give them a quick review or give them, let's say, 10 points to what you can do to just amplify your resume, I will do that. If I do this today, the girls I have in my team, they will follow the same work ethic that I follow for myself. And they're more likely to do it as well because I'm a biggest advocate of change. I personally felt, going back to the purpose of it, there's a huge gap in the Pakistani market. There is no sense of professional guidance. There was no sense of professional coaching. There is nobody who makes you sit and who tells you all the do's and don'ts when stepping into the professional world, while being in the professional world, when even saying goodbye to the professional world. So I wanted to be that bridge.
I saw an opportunity, I grabbed it, and I understood that through this business, I won't just be helping myself, I would actually be helping millions of people out there one day, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इरम, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ ना, अक्सर लोग बच्चे हमारे यहाँ बच्चे भी आई मीन मिड लाइफ में भी दे टू अ कंप्लीट करियर स्विच, ठीक है, और बहुत अनकन्वेंशनल करियर पिक करते हैं। आपका भी करियर मुझे बहुत ही अनकन्वेंशनल लगता है और वो है भी। सो लोग तो बहुत बातें करते होंगे ना कि अरे भाई इतनी अच्छी जगह से नौकरी छोड़ दी, क्या ज़रूरत थी? आपने फेस किया? मैंने बहुत ज़्यादा ये फेस किया इन द बिगिनिंग, बिकॉज आई यूज टू हेयर दिस ऑफन फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, रेज्यूमे राइटर कौन बनता है, कितना कमा लोगी, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, ये कोई सीरियस प्रोफेशन नहीं है। आई हर्ड everything, but I kept going because I was confident about my unique skill set, and I noticed how this niche will actually help not just me but a lot of people out there, and I knew that I could expand on it one day, and alhamdulillah I did. एक्सेलेंट। इरम, हमने बात की थी कुछ क्लाइंट विन्स के बारे में भी, थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ अ क्लाइंट विन लाइक एक्चुअली? Sure. So I'll tell you the story of one of my client really quickly. उनका नाम था हुसैद शेख, and he was working as a night shift manager at Burger O'Clock in Karachi. ठीक है? He reached out to me and he said, Iram, I'm the only bread winner of the family, and मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, एंड मेरी फैमिली में कोई और नहीं है, देयर इज़ नोबडी एल्स हु इज़ अर्निंग एज वेल। उन्होंने मुझे अपनी CV भेजी। हिज CV नीडेड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उनकी CV शायद 4 पेजेस की CV थी, उनका रेज्यूमे 4 पेजेस का था, ठीक है। एंड उनसे बात करने के बाद somewhat I realized that could be that he wasn't really a confident individual himself. खैर, उनकी CV पे काम किया, फिर थोड़े से उनके इंटरव्यू स्किल्स पे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा काम किया, एंड आई हेल्प्ड हिम प्रिपेयर अ कपल ऑफ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। 2 months later, Usaid WhatsApped me that he's made it to Dubai and he's now the manager of the world's leading hospitality chain. मेरी लाइफ में शायद बहुत विन्स आए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने करम किया तो आएंगे, बट Usaid's win felt like a personal win. He was a night shift manager here in Karachi, and उनकी सैलरी was barely anything, Zainab, barely anything. एंड अब मैं उनकी व्हाट्सएप स्टोरीज देखती रहती हूँ, वो पार्टी कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं, एंड आई एम स्टिल इन टच विद हिम, एंड आई फील लाइक I am beyond grateful for BBC to happen. It is one of the biggest dreams for, you know, for it to be recognized. Absolutely. But Usaid's win will always be a personal win. And it is actually कि आप लोगों की जब ऐसे ग्रोथ देखते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं I see myself as a coach, as a mentor, एंड यू नो जब मैंने ये इंटरव्यू आपके साथ शुरू किया और जब मैं मिली तो मुझे लगा कि ठीक है, रेज्यूमे राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट फॉन्ट्स, इट्स ऑल अबाउट द राइट कीवर्ड्स, बट इट्स सो मच मोर देन दैट, एंड हाउ एक्साइटिंग। इरम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। और जो है मुझे बस ये लगता है कि much more success to you inshallah in your future. Thank you so much. Thank you. I hope you grow and scale like crazy. Inshallah. I wish you and the entire team of Momcast literally the same. You guys have been amazing and keep doing amazing things, not just for you, but everywhere you go. Thank you. Everything we hope that the people that are watching you, they're inspired, they reach out to you, they prepare for any role that they want to take up in life. Inshallah. Thank you. अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम इसी तरह और एक्साइटिंग, हेल्पफुल मेंटोर्स, कोचेस इन योर लाइफ लेकर आएंगे, जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे लिए बहुत आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन होंगी। थैंक यू सो मच।